Back in 2003, there was a weird revolution that happened in football, wherein a very rich man came into football, bought a club, and basically taught everybody else how to just go about buying players after players without really thinking a lot and then winning titles as well. I'm taking you back to the 2003 era of Chelsea and Roman Abramovich's ownership at that point in time. 19 years later, Mr. Abramovich was forced to sell off Chelsea. In comes a new owner, an owner nobody expected to be able to compete and outspend the biggest oil money clubs as well. But that is what happened. Welcome back to Top Corner, ladies and gentlemen. हम लोग आज बात कर रहे हैं चेल्सी के एक मनी बोट पे सवार हुए पिछले 22-23 साल की जर्नी की. हम लोग आज बात कर रहे हैं नए ओनर टॉड बोली का, जो चेल्सी का टेक ओवर था 4.25 बिलियन पाउंड्स के बाद से, किस तरह से उन्होंने ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन पाउंड तो प्लेयर परचेजेस में ही निकाल दिया है 2-3 साल के अंदर ही. वी टॉकिंग अबाउट दैट. वी टॉकिंग अबाउट हाउ इन ऑल ऑफ दिस मैडनेस देयर इज अ सर्टेन क्रिएटिविटी लाइंग देयर which is actually helping Chelsea just bend the rules a little bit, and how, despite everything, despite all the mockery, there is a certain fear across the globe, especially in Europe, because the kind of money they're spending, they're bound to get it right eventually if they continue like this. And once they do get it right, once they do get it right with their bloated squad sizes, when once they do get it right with like 70-80 million का प्लेयर हर विंडो में खरीदना, they will be a problem for everybody else. तो हाँ जी, कहाँ से शुरू करें मिस्टर टॉज बोली के ऑलमोस्ट इविल जीनियस वाले एरा? अगर कोई नॉर्मल फुटबॉल फैन अगर देखेगा चेल्सी को एज वी थ्री बेसिकली व्हेन वी सी अबाउट चेल्सी की हाउ आर दे डूइंग दिस, भाई जो छोटे छोटे क्लब लालीगा तो छोड़ दो, वो लोग तो ऐसे उनके सपने में भी आता नहीं होगा कि इतना मनी हम स्पेंड कर सकते हैं इवन फॉर अ क्लब लाइक बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड. कंपेयरिंग टू दैट, भाई ये लोग दे आर, हम पहले सोचते थे कि ये पागल है बंदा, ये टॉड बोली जो है पागल है, ये क्लब को 2-3 साल में बंद कर दिया. हाँ थोड़ा तो है, बट ये हमको लगा था पूरा पागल है, ये 2-3 साल में चलेगा इसकी पागलपंती, 1-2 बिलियन खर्च करेगा, उसके बाद खुद क्लब बन के चला जाएगा, विच वेर फाइन. चलो एक निस्तानी गई. बट व्हेन वी सी अबाउट 3 साल का जो लास्ट हुआ है, इसने जो काम किया है, एंड आफ्टर ऑल दैट ही इज, अभी तक रिजल्ट्स आ रहे हैं एंड प्लेयर्स आर डूइंग गुड. और जो प्लेयर नहीं कर रहे उनको बाहर निकाल रहा है, जो प्लेयर अच्छा कर रहे हैं उनको अंदर डाल रहा है. एंड इट इज काइंड ऑफ लाइक अ इविल काइंड, आप बोल सकते हो कि मेरे पास सबसे बेस्ट क्या है, पैसा है, फेंकते चलो. एंड ऐसे नहीं फेंकते चलो, व्हेन वी सॉ कि ये लोग जो 1.23 बिलियन पाउंड इन्होंने जो फेंका है, हम लोग सोच रहे होंगे पीएसआर इनको लिटरली क्या देख रहा होगा, भाई हाउ इज दिस हैपनिंग. बट व्हेन वी टोटली हमने जब ये डिग आउट किया कि क्या क्या हो रहा है, व्हाट आर दे डूइंग टू, मींस जो भी बोलो, ये लोग बिजनेसमैन है, एंड बिजनेसमैन का एक ही है कि भाई पैसा कैसे बनाना है, और पैसा कैसे बनाना है और पैसा कैसे बचाना है. दैट्स द बेस्ट पॉइंट ऑफ अ बिजनेसमैन. ओके, तो दे नो व्हाट हाउ टू स्पेंड, दे नो हाउ टू. ऐसा नहीं कि हमारे जैसे यूनाइटेड जैसे कि हाँ भाई तो एंटनी 90 मिलियन ले ले, ऐसा नहीं कर रहे वो. एटलीस्ट दे आर buying quality players who can perform, and then investing in them also. Just let's example आपका 2022 से 25 का भी बता देता हूँ. चेल्सी स्पेंड अबाउट 1.3 बिलियन पाउंड, अबाउट बोल दो. अभी इस सीजन ही ऑलरेडी इन्होंने 200 मिलियन पाउंड से लोग कर चुके हैं. ओके, दिस इज अमाउंट जस्ट अंडर टेड बोली, टॉड बोली, दिस इज जस्ट अबाउट अंडर टेड बोली का है अभी तक. एंड दे आर लिटिल, दे मींस ऐसे नहीं कि ये लोग पीएसआर को हिट कर रहे हैं, दे आर in between PSR. They can spend about 300 to 300 400 millions more without even spending a money. How crazy. आप लोग जस्ट इमेजिन करो, कल बार्सिलोना को, आज जावियर टेबास का आज आया है कि निको विलियम्स को अभी तक बार्सिलोना कर नहीं सकती, वो 50 मिलियन का साइनिंग है सिर्फ. इमेजिन अभी चेल्सी और 300 मिलियन खर्च सकती है विदाउट थिंकिंग अबाउट पीएसआर. एंड the players they have signed already this window, I'll just read that out. Liam Delap खरीदा है इन्होंने 30 मिलियन का, Joao Pedro 55-60 मिलियन के आसपास, Mamadou Sarr 12 मिलियन, Kendry Pies 8.4, Dario Esugo 18.5, Mathis Amugo 12.5, and Jamie Gittins is almost done from what the rumors are coming in, and that signing would be about 70 million. And the reports that are coming out of Chelsea and the journalist world, football journalist world, apparently Chelsea is planning to go into the next season with 9 attackers at the very least.
they almost had that many this season as well. एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, Chelsea do I think go out of their way to sign players with the most random names you can have. और ये बड़े सालों से देख रहा हूं मैं, नहीं, एक और सबसे चीज है कि अजीब नाम के प्लेयर ये चेल्सी में ही जाके बसते हैं, या वो अपने बोल देते हैं कि हमें ऐसे ही नाम वाले चाहिए. बट वट एवर दैट केस इज, इवन इफ वी लुक एट दिस सीजन, एज सुजय यू पॉइंटेड आउट, इस साल भी चेल्सी के पास बहुत ब्लोटेड स्क्वाड था, स्पेशली अटैकिंग सेंस में. दे हैड मुड्रिक, दे हैड सैंचो, और ये They तो did खेले भी have नहीं. Modric technically. हाँ, मतलब they had him on paper, but they didn't have Modric, and they didn't need Modric. They had then Madueke and Jackson and Palmer, जिसको 50 मिलियन का लिया था सिटी की अकेडमी से. एंकुकू इतना फॉर अ 19-20 ईयर ओल्ड उस टाइम पे. और अभी तो मेरे को याद भी नहीं आ रहे, इतने तो इनके पास फॉरवर्ड्स हैं यार, पेड्रो नेटो और वगैरह. मैं एंड दैट बताता इज हूँ स्टिल भाई, कंटिन्यूइंग. मैं बताता हूँ इनका स्क्वाड में प्लेयर्स ऐसे थोड़ा यार. वी विल नॉट लीव यू हाई एंड राइट. रुक. ओके, कोल पामर, क्रिस्टोफर एनकुंकू, केंड्रे पाइस. आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट स्क्वाड विद आफ्टर हैविंग मेड द साइनिंग्स इन दिस विंडो सो फार. टायरिक जॉर्ज, मुड्रिक तो चलो बैंड ही है तो वी वोंट काउंट. पेड्रो नेटो, नोनी माडुएके, जोआओ पेड्रो, निकोलस जैक्सन, लियाम डेलाप, आर्मांडो ब्रोहा. अच्छा ये तो चला गया वापस, सॉरी. पर मार्क गोयू करके है कोई 19 साल का बच्चा. एंड डेविड डाट्रो फोफाना, जो कि ये अभी नहीं तक पता था, जिंदा, बट जो भी अभी तक जिंदा है स्क्वाड में है. see, I told you, like, funniest names, नहीं, always. But coming back to this and add to this, Jamie Gittins is almost done, a very Gittins is exciting almost winger. done. ठीक है. And to add, they paid 5 million for Sancho to leave. Yeah, They paid money for someone to leave. that's what. Exactly. पैसे की दिक्कत नहीं है यार, तू जा यहाँ से बस. दे कुड हैव बट क्योंकि सैंचो का अगर किसी ने पता है ना, सैंचो का अभी 25 मिलियन का रिलीज क्लॉज था. 25 मिलियन. इन्होंने 5 देके तो निकल जाए थे उससे. वो that says a lot more about Jadon Sancho than Chelsea, to be very honest. But see, that is what we're talking about, and this is something, this criticism has been thrown at Chelsea, especially under Todd Bowley for the last couple of years, कि भाई a football club with such a bloated squad, such a huge squad cannot function. That is the criticism that has been thrown at. But under Maresca, again, this is something that probably needs to be spoken about. Todd Bowley in the last 2 years, कब खरीदा था उसने? 23 में खरीदा ना? 2022 में खरीदा. 22 समर में. In the last 3 years, he's already had 5 managers, 3 seasons में. So Thomas Tuchel, who won the Champions League, was dismissed. Then there was that Brighton वाला manager, Graham Potter. फिर उसके बाद Graham Potter को मतलब सीजन खत्म होने से पहले हटा 18 दिया मिलियन पाउंड देके. फिर फ्रैंक लैम्पार्ड आया था कुछ मैचेस के लिए. Then they got Mauricio Pochettino in. Then they were not happy with him. And last season they got Enzo Maresca in. Under Enzo Maresca, somehow, the discount Pep Guardiola, they seem to be getting it right a little bit. He's closer, yes. He's closer. See, to be very fair, Pochettino was getting closer. But again, this owner, this club doesn't seem to have patience. ये इनका परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन में आता है. अब्रामोविच कौन से किसी मैनेजर के साथ पेशेंट था भाई साहब? उसने मैनेजर बदले, डरते थे सारे उससे. तो दैट इज देयर, वो उनका चार्टर है चेल्सी का. सब लोगों का अपना ट्रेडिशन होता है ना हर क्लब का, हम ऐसे खेलेंगे, हम ऐसे करेंगे. चेल्सी का होता है हम मैनेजर की करेंगे. So Maresca seems to be getting it right, to be very fair to him. They finished 4th last season in the Premier League, qualified for the Champions League very obviously, won the Conference League. That was not a surprise. अगर वो नहीं जीतते, that would have been a surprise. But still, silverware. And they are on track, to be very fair, they are on track to winning the inaugural Club World Cup, this iteration of Club World Cup. They're doing well. They're in the... Not just that, they're in a very easy half in the easy half. Yeah, we discussed that. Yes. Comparatively, we discussed that. It seems that they're about to start getting it right, because इनके जो दो सबसे बड़े signings हैं अभी तक, which is Caicedo and Enzo Fernandez. These two are literally starting to click. पिछले season में Caicedo, हमने जब Best 11 की बात की थी, I spoke about Caicedo, and being a Liverpool fan, I never wanted to, but he's actually done well, to be very fair. And you have to keep the biases aside कि भाई बंदा actually अच्छा कर रहा है अब. Enzo Fernandez has started clicking. He was very good in the last season, especially
कुछ मैचेस में तो he later was outshining Palmer and all. Hmm. Then you have Cole Palmer, who's again a brilliant talent, Hmm. as long as he's on the football pitch. Off the football pitch तो वो मेरे को stoner लगता है somehow. जो होता है ना वो मॉर्ग में जो पड़ी रहती है जो कोल्ड जो बॉडी he सारी is the definition वैसा of ही cold. लगता है कि वो कोल्ड वैसे ऐसा ही। होता है लिटरली वही उसका है. But he But does they look are like a about to generational talent on exactly the they pitch. are about to Fantastic. start getting it right on a bigger scale. That is the big worry at this point in time. And ये मैंने मेरे ख्याल से 2 वीडियो पहले जब हम बात कर रहे थे टू मच फुटबॉल वाली, I had spoken about it कि going forward the sheer number of games, clubs with bigger squads might just have a big advantage over the clubs that don't have as big a squad maybe. Exactly. I don't pretend to be an expert, but that might just start to happen. Exactly. No, it will अभी अगर चेल्सी का स्क्वाड देखो 41-42 प्लेयर्स है उनके स्क्वाड में अभी उनके नहीं। एकेडमीज और सारे मिला के हाँ। 40 प्लेयर्स आपके खेलने वाले हैं 11 प्लेयर्स. ओके इनका बेंच लिटरली भाई ये खुद के अंदर ही उनका 2 मैच 2 टीम 3 टीम 4 टीम हो सकती है. एग्जैक्टली किसी कंपटीशन में यूरोपियन कंपटीशन में या इसमें आप एक लेवल तक एक नंबर तक 25 एट बेस्ट 27 28 प्लेयर्स रजिस्टर कर सकते हो. आप प्रीमियर लीग में भी एक लेवल तक ही प्लेयर्स रजिस्टर कर सकते हो. 40 लेके नहीं चल सकते, बट वो लेके चल रहे हैं. वो कह रहे हैं हम इसको डाल देंगे कॉन्फ्रेंस लीग में, इसको डाल देंगे लीग कप में, इसको डाल देंगे एफए कप में, इसको चैंपियंस लीग खिला देंगे, इसको प्रीमियर लीग खिला देंगे. उनके पास 2-3 टीम्स का सामान रेडी है. Exactly. कुछ क्लब्स हैं वो एक पूरी टीम नहीं बना पा रहे. चेल्सी के पास 3 टीम है और वो उसी हिसाब से चल रही है. एंड अगर आप देखोगे अगर आप चेल्सी का स्क्वाड देखो शुभम भैया उनका लिटरली 2 या 3 मैक्सिमम 4 प्लेयर ही उनके सेटल है पूरे. कोल पार्मर, एंजो फर्नांडिस, काइसेडो एंड to an extent Nicholas Jackson. Okay, नहीं तो not anymore. Nicholas Jackson is not settled anymore. Liam Delap आएगा. They might go for more strikers. Reece James, if fit, even at the moment, their center backs like Shaloba, you could say he's good. Maybe, but like attack में options की बात ही कर लो. Forwards की, I'm not even putting them in left wing, right wing and all. And strikers हटा दो अभी. Strikers अभी के लिए हटा देते हैं. My test. ठीक है. पेड्रो नेटो नहीं खेल रहा तो एनकुंकू भी है आपके पास, कोल पामर भी है आपके पास, मडुएके है आपके पास, गिटेंस आने वाला है, जोआओ पेड्रो आपने साइन कर लिया है, एस्टेवाओ के साथ आप हेवीली लिंक्ड हो, मलिक फोफाना के साथ आप हेवीली लिंक्ड. दे कैन एक्चुअली गो इन लिटरली हर मैच में. अब 5 सब्स्टिट्यूशन भी अलाउड है बाय द वे पिछले कुछ सीजन से. आप लिटरली अपना पूरा फॉरवर्ड लाइन बदल सकते हो किसी भी गेम में एंड द सामने वाला टीम हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स टू एड्रेस इन गेम. Exactly. How do you prepare for that? And the funny part is सुजय भाई, if you add all over this, इसके ऊपर भी सारे आप ऐड कर लो लिटरली, प्लेयर भी कंप्लेन नहीं कर रहे उनके. They are also happy with that limited game time also. भाई पैसा जब तक लिटरली बोल रहे ना, पैसा जब तक आ रहा है, big contracts for big years is what's happening. But one essential point here is it's not that any other club or no other club has money. A lot of clubs have a lot of money. Still, there have been restrictions put in by the leagues, by the association of clubs. Still, बात यह है कि इस लेवल पे स्पेंडिंग हर क्लब नहीं कर पाता और नहीं कर पा रहा रिचेस्ट वाले भी. उन्हें देखना पड़ता है समथिंग कॉल्ड PSR. चेल्सी कैसे बीट कर रही है? I would like for the viewers to understand this. That is where the evil genius of Todd Boehly comes in. So while we say Todd Boehly has been spending left, right, and center, it's like he's spending on his mistresses कि हाँ सब पैसा ले जाओ. Still there is a method to this madness that we have also recently realized. I used to make fun of his big contracts to players such as Enzo और काइसेडो 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 10 ऑलमोस्ट 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट पहुंचा एक फुटबॉल प्लेयर का. इट इज लाइक अ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट देना किसी प्लेयर को. 10 साल 4 साल में इंजर्ड हो गया फिर क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? कुछ कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते ना. तो 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट सुना ही नहीं था. बट वो कैसे बीट कर रहे हैं? वैभव सुजय आप वो बताइए. देखो मेरी हाथ में 5 उंगलियां है तो चेल्सी का ये पूरा 5 मींस ऐसे पूरा एक बोल सकते हो 5 और दे आर टेकिंग दिस 5. ओके देयर 5s आर फर्स्ट एज वी ऑल सेड कि बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं. 7 या 8 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं. एंजो फर्नांडिस उसका खरीदा था चेल्सी ने एंड बट इसके अगर ट्विस्ट है कि उसका 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट है बट अंडर PSR जो प्रीमियर लीग का रूल है इसको जो 110 मिलियन पाउंड्स है
उसको आप बाय 8 करोगे तो उसका इस साल का पीएसआर में आ रहा है 12.5 मिलियन पाउंड्स. ओके. Hmm. एंड दे इंक्लूडिंग काइसेडो, तो इन्होंने जो 2023-24 में जब साइनिंग किया था 400 मिलियन पाउंड्स समथिंग लाइक दैट, बट ऑन द पेपर ऑन पीएसआर इट वाज जस्ट 50 मिलियन पाउंड्स. 50 मिलियन पाउंड्स, इमेजिन. ओके, विद दिस हैज हेल्प्ड देम अ लॉट. सेकंड आती है इनकी एकेडमी सेल्स. इन्होंने 210 मिलियन पाउंड्स एकेडमी सेलिंग से खरीदा है. मींस पिछले 3 एकेडमी सीजन में. पिछले 3 सीजन में. एकेडमी का क्यों इतना ज्यादा कहा जाता है? क्योंकि आप देखो, आपको वो प्लेयर फ्री में आया है आपके पास, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग. तो आपके जो भी जितने भी, फॉर एग्जांपल मेसन माउंट को हमने खरीदा है 55 मिलियन पाउंड, उसको 55 मिलियन पाउंड से प्रॉफिट है चेल्सी के लिए. सो आप Direct 3 साल profit, yeah. 210 मिलियन पाउंड आप सिर्फ प्रॉफिट्स में आ रहा है आपका. थर्ड चीज है कि ओनर के पास अंधा पैसा है. ओनर के पास आपका मीन्स लिटरली पैसे की भरमार है. ही इज अ वन ऑफ अ बिग बिजनेसमैन. उसका जो कैपिटल, इसका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, उसमें टेंस ऑफ 100 बिलियन डॉलर्स का उसका सिर्फ यही है. सो ही कैन इंजेक्ट मनी एनी टाइम ही वांट्स. ओके. चौथी चीज है, ये जो लोग 110 मिलियन की साइनिंग हो रही है, जैसे ब्राइटन के साथ ही इन लोगों ने 300 मिलियन पाउंड्स की साइनिंग की है लास्ट 3 साल में. 300 मिलियन, Not including the coach. नॉट इंक्लूडिंग द कोच. 300 मिलियन Yeah. Coaches, sorry. Which is कोचेस. wow. सो अभी ये जो 300 मिलियन पाउंड एक साल में नहीं दे रहे हैं, ये उसको 8 साल में 10 मिलियन पाउंड अभी दे दिए, कभी 40 मिलियन दे दिए, कभी 30 मिलियन दे दिए भाई इनके पीएसआर में. दैट्स व्हाई व्हेन आई स्टार्टेड द वीडियो आई सेड दिस की इनका पीएसआर इतना बढ़िया है ना. बारका वाले अगर पीएसआर इनका देख लेना, ये लोग चकरा के गिर जाएंगे. Barca So people that- should learn something from this, by the way. And They should. last वाला हर है, बात पे लीवर नहीं खोलने होते उन्हें. ये भी कर सकते हो. There is And another great point. हाँ, last one. Yeah. लास्ट वाला है, इनका जो इन्वेस्टिंग होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और वुमेन्स टीम, यूथ टीम्स में, वो पीएसआर में नहीं है. तो ये लोग कुछ भी खर्च कर सकते हैं इनके इन्वेस्टमेंट में जितने And भी है. in लोगों ने recently they made a big sale हाँ, to generate a lot more fund, a lot more Exactly. profits. That big sale was their entire women's team. Who did they sell it to? That is the bigger point. Hmm. Who did they Whom sell did it they to? sell? Themselves. themselves. Their own parent company, they sold it to them. So basically, Todd This is- Bowley is your Jim Ratcliffe का dream version. Exactly. यूनाइटेड का जो नया ओनर आया है, पार्ट ओनर, ही इज बीन ट्राइंग एवरीथिंग कि ये भी काट दो, वो भी काट दो, खाना काट दो. कल को वो बोलेगा सीट निकाल निकाल के लोगों को बेचो, अपने घर में लगाएंगे लोग. बट दिस गाय इज वेरी वेरी स्मार्ट. Exactly. They've basically gone deep into the rules. They've basically understood every single loophole that can exist, and Yeah. they've found a way to exploit. They have. Again, They have. you know, Every Barca single people should learn loophole. from this. To be very fair to Barcelona, आज उनका announce हो गया that they are back to their 1:1 and they can now spend on signings whatever they want. But coming Another back to lever, Chelsea, but okay. coming back But to yeah, that's Chelsea, like I'll say. So that Todd Bowley is like Roman Abramovich on steroids. almost. Exactly. 3 साल में Almost. he's like that on steroids. He's like okay, पिछले ओनर ने कितना स्पेंड किया था, just so everybody knows. Roman Abramovich अपने पूरे almost 20 years that he was the owner of Chelsea Football Club spent about 2 billion, Pounds. right? Yeah, you can't Yeah, really it's compare a figure, that because of course. that is It's a not different era. comparable. It started in 2003, 3. but still, that amount has been covered in 3 years. Of course, inflation वगैरह सब है, हम उस पे नहीं जा रहे, but Almost. that amount has been covered almost in 3 years. 20 Right. साल and 3 years. Yeah. But So that is why that's- he's that guy on steroids. We thought initially, we thought initially that Todd Bowley is, the way he's running Chelsea Football Club, he might run it into the ground. We wouldn't have had any sympathies there. But it seems that is not the case. Hmm. He is running the club quite smartly. Money matters. जब तक पैसा है, आज सक्सेस नहीं है तो कल आ जाएगी. जब तक पैसा है, सक्सेस आ सकती है. तो उस मामले में तो ये काफी अच्छा कर गए. See, this is what I will close it with before we get to what Chelsea can do. Hmm. They are, in my opinion, they are one manager sporting director combination away from absolutely dominating. Because आप अगर देखो, they still have issues in areas. They're piling on हाँ. attackers,
but they still have issues at the back. They still have issues with their goalkeeper. Robert Sanchez cannot win you a Premier League, unfortunately. So they still have those issues. That's what I'm saying. They are probably one manager, sporting director combination away from absolute domination. What happened with City? City का वो क्या नाम है उसका, टसीकी कसीकी जो भी नाम है उसका, वो TXIKI जो भी नाम है उसका, Bergstein जो भी नाम है, वो that him and Pep Guardiola got together and made City the dominant force that it has been over the last 10 years. सिटी का अस्तित्व क्या Liverpool, था? Klopp and Edwards came together. They actually did well in their own limited settings or whatever. These guys are one that combination away. It can be Maresca or a sporting director, or it can be a different manager. I'm not sure. I'm not sure whether Exactly. they'll have. It could be next year. It could be a couple of years later. They have big players on big contracts, and they're not going to let them go. Plus, they're going to keep buying. They're going to find more loopholes. I think it will be very interesting to see what more loopholes Chelsea finds in the Right. coming years. So I do agree, Sujay. One thing though, इसमें मैं बोलूंगा कि they can dominate, but because उनका owner भी थोड़ा erratic है, अभी तक जो दिख रहा है, that might, while that is an advantage in terms of money spending, that might also be a hindrance for a domination sort of thing. Possibly, But possibly, that no is doubt. something we'll get to see. He's very That is something we'll get trigger happy. There is no doubt. He's हाँ, very trigger exactly. happy. Exactly. Exactly. But I do think जिस तरह से चेल्सी ने लैंडस्केप चेंज किया था उस टाइम पे in 2000s, 2003. like 2003 से 10 के बीच Three में, and onward. Yeah. I do think this guy is about to do the same to Do football. same. Is- It and is. Maybe- I mean, he started off that. Maybe in terms of rules, or maybe in terms of other clubs exploiting those rules. But I do believe it has already started, by the way. City ने जो हालैंड को भी एक बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट दिया है. 7 years contract also for Haaland also. Yeah. तो आप देख लो ना, आप अगर देखोगे तब जब रोमन एब्रोमिच आया था तब उसके साथ एक रेवोल्यूशन आया था फुटबॉल पे. अभी जो नया अभी करंट पीरियड है, That's जो what- पोस्ट कोविड exactly. पीरियड है, अभी exactly एक वही और बोला नया मैं. रेवोल्यूशन होने वाला है. क्योंकि आप देखो पहले कितने 100 मिलियन के साइनिंग्स होते थे, अभी हर सीजन आप देख लो 1 या 2 100 मिलियन साइनिंग्स हो रहे हैं. और सारे के सारे साइनिंग्स देख लो 50-60 कितने मिल रहे हैं हमको अभी. वही, एंड आप ऐसा मनी, आप ऐसे इतना भी इन्फ्लेशन नहीं हुआ कि आप सारे के सारे 50-60 मिलियन, कोई 10 गोल मारते 70 मिलियन इसकी वैल्यू आ जाती है. सो देयर इज अ बिग गोइंग ऑन. चेल्सी हैज ओपनड अ न्यू वेंचर, न्यू फ्यूचर की ये हो सकता है, ये हम कर रहे हैं, एंड वी आर डूइंग इट वेरी ग्रेट. एंड आई एम प्रिटी श्योर इस सीजन नहीं तो नेक्स्ट सीजन से यू आर गोइंग टू सी मोर 7 year 8 year 9 year कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं. आप बड़े प्लेयर्स को फिर से देखते हो, क्योंकि अभी जो लालीगा क्लब्स आर विल बी मोर इंटरेस्टेड विद दिस, क्योंकि उनका तो भाई नेक एंड नेक चलता है हमेशा का. बारका देख लो एंड रियल मैड्रिड देख लो, तो दे विल बी साइनिंग मोर लाइक दिस. एंड चेल्सी आर लाइक, आप बोल सकते हो प्रॉपर बिजनेस क्लब. They know what they are doing. People might find them ridiculous, insane, Irritating. but down when you It's- research it down, it's a very genius idea. and it's starting to work. So okay. And certainly. So Current just on squad- that, I think football has been leading that way. We all have seen the influx of money. So football has been leading that way. Chelsea is just using that taking a lot more it to smartly. more It's smartly using- and more like with more speed. They are like I think the first club to actually start following this template a little bit in however they can would be Newcastle United. Exactly. Yes, Because they उनका have the money. restrictions They की वजह haven't से till now. they They've are the actually held richest their owners in hands back. football. That's what I'm saying. What? They are the richest owners in football. Actually, And they've actually अगर held वो- their. They've actually have to held their. Yeah, if they can spending. get inspired and find a way to just play around this, you might be looking at a new football world order. What I think we're going to Very. see through this Chelsea model, I think what we're going to see more is, of course, more spending. I think we're going to see bigger bloated squads, more players, which will, of course, mean less or like fewer chances for other smaller clubs to be able to compete properly, because एक टीम के पास 30 अच्छे प्लेयर है और तुम्हारे पास शायद 11 भी ना हो. तो वो चीज, और वो फुटबॉल में दिख रही है बड़े सालों से. सिटी हैज हैड बिग स्क्वाड्स अपने पूरे विनिंग कैंपेन में, बिग स्क्वाड्स लाइक क्वालिटी ऑन द बेंच. आई थिंक चेल्सी उसी में और एक स्टेप ऊपर जाना चाहती है. So I think that is something we चलो. will see more in the future. Next season, just Premier League prediction, nothing else. Next season, Chelsea in the Premier League without explanation. कहाँ Top finish four. कर रहे हैं? Top 4. Again top four. Not a title challenge. At the moment, nahi. I don't Nahi. think so.
but we'll they see. need to address their बहुत सारे उनके problems है. They have core issues, especially in the team. So, चलो, what do you think? Done है, done. What do you think? भाई अगर उन्होंने गोलकीपर अच्छा साइन कर लिया ना, which they are linked to a very good goalkeeper right now, if they can get a goalkeeper, they are in the title race for sure. Okay. That is the only big issue to be solved. Anyways, what do you guys think? Please do let us know in the comments about the evil genius of Todd Bowley, obviously, and about what Chelsea are doing and what Chelsea can do going forward. Comments में प्लीज बताते जाओ जरूर से. वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल पे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज थोड़ा सा encouragement के लिए लाइक दबा दो एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल. शेयर करो कुछ लोगों के साथ जिनको आपको लगे कि यार इस टाइप की कॉन्वर्जेशन इस बंदे को पसंद आएंगी. वी वुड लव टू नो देयर ओपिनियंस एज वेल. बाकी तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. अगर रेक्स की तबीयत तब तक ठीक होगी तो विल टॉक अबाउट बार्सिलोना का फाइनेंशियल restrictions being lifted off and how happy is he and other Barcelona fans like him. But yeah, let's go ahead and see what is happening. तब तक के लिए bye bye, good night. Bye bye.